लोग आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम टू वीलॉजी बाय अत्याशूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडीज़ को। हम लोग पढ़ रहे हैं BIF 101 इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इसका टॉपिक नंबर 54 और 55 इस वीडियो में करेंगे। 54 राइबोसोम इज़ अ राइबोसोम। ठीक है, इसकी वीडियो सुन लेते हैं पहले। Once the correctly charged tRNA has been placed in the A site and has rotated into the peptidyl transferase center, peptide bond formation takes place. This reaction is catalyzed by RNA, specifically the 23S rRNA component of the large subunit of ribosome. Early evidence for this came from experiments in which it was shown that a large subunit that had been stripped of its proteins was still able to carry out peptide bond formation. Early experiments में ये देखा गया कि लार्ज सब यूनिट जिसकी प्रोटीन सारी रिमूव कर ली जाए, इवन देन ये लार्ज सब यूनिट जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है. इसका मतलब है कि कोई प्रोटीन इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर रही. प्रूफ दैट द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज इज entirely composed of RNA has come from the high resolution three-dimensional structure of the ribosome, which reveals that no amino acid is situated closer than 18 angstrom from the active site. तो इसकी जो एक्टिव साइट है इसके 18 एंगस्ट्रॉम तक डिस्टेंस तक कोई भी अमाइनो एसिड जो है वो यहां पे प्रेजेंट नहीं है. बिकॉज कैटालाइसिस रिक्वायर्स डिस्टेंसेस in the range of 1 to 3 angstrom, it is clear that the peptidyl transferase center is a ribozyme. That is, it is an enzyme composed of RNA. How does the 23S rRNA catalyze peptide bond formation? Means what is the mechanism of this catalysis? The exact mechanism remains to be determined, but some answers to this question are beginning to emerge. First, base pairing between the 23S rRNA and the CCA ends of the tRNAs in the A and the P sites help to position the alpha amino group of the amino site tRNA to attack the carbonyl group of the growing polypeptide attached to the peptidyl tRNA. These interactions are also likely to stabilize the aminosyl tRNA after accommodation, because close proximity of substrates is rarely sufficient to generate high levels of catalysis. It is hypothesized that other elements of the ribosomal RNA change the chemical environment of the peptidyl transferase active site. तो सबस्ट्रेट्स का क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना सफिशिएंट नहीं है कि कैटालाइसिस हो सके. तो इसका मतलब है कि कुछ और फैक्टर्स हैं आरएनए के, राइबोसोमल आरएनए के, जो इस केमिकल एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, एंड दिस चेंज लीड्स टू द कैटालाइसिस. फॉर एग्जांपल, इट हैज बीन प्रपोज्ड दैट nucleotides in the peptidyl transferase center accept a hydrogen from the alpha amino group of the amino site tRNA, making the associated nitrogen a strong nucleophile. तो इस तरह से ये जो है नाइट्रोजन जो है इसको न्यूक्लियोफाइल बना दिया जाता है, ताकि ये अब न्यूक्लियोफाइल जो है ये कार्बोक्सी टर्मिनल पे अटैक कर सके. This is a common
mechanism used by many proteins and enzymes to stimulate nucleophilic attack of carbonyl groups. सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो होगी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे। आगे हम लोगों ने करनी है रीडिंग। सो चलते हैं और रीडिंग कर लेते हैं अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पीपीटी डाउनलोड कर लिए हैं। अब यहाँ से हैंडआउट्स पहले पढ़ लेंगे। Once the correctly charged tRNA has been placed in the A site and has rotated into the peptidyl transferase center, peptide bond formation takes place. This reaction is catalyzed by RNA, specifically the 223 Schwarzberg rRNA component of the large subunit. ठीक है। Early evidence for this came from experiments in which it was shown that a large subunit that had been largely stripped of its proteins was still able to carry out peptide bond formation. ठीक है। Proof that the peptidyl transferase is entirely composed of RNA has come from the highest resolution 3-dimensional structure of the ribosome, which reveals that no amino acid is located closer than 18 angstrom from the active site. Because catalysis requires distances in the 1 to 3 angstrom range, it is clear that the peptidyl transferase center is a ribozyme. That is an enzyme composed of RNA. ठीक है। How does the 23 sRNA catalyze peptide bond formation? The exact mechanism remains to be determined, but some answers to this question are beginning to emerge. ठीक है। The exact mechanism remains to be determined, but some answers to this question are beginning to emerge. Okay, ये सेकेंड टाइम पढ़ लिया है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। फर्स्ट, बेस पेयरिंग बिटवीन द 23 Schwarzberg rRNA and the CCA ends of the tRNA in the A site and the P sites help to position the alpha amino group of the amino acid tRNA to attack the carbonyl group of the growing polypeptide attached to the peptidyl tRNA site. These interactions are also likely to stabilize the amino acid tRNA after accommodation. ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है because close proximity of substrates is rarely sufficient to generate high levels of catalysis. It is hypothesized that other elements of the ribosomal RNA change the chemical environment of the peptidyl transferase active site. ठीक है। For example, it has been proposed that nucleotides in the peptidyl transferase center accept a hydrogen from the alpha amino group of the amino acid tRNA, making the associated nitrogen a stronger nucleophile. This is a common mechanism used by many proteins to stimulate nucleophilic attack of the carbonyl groups. Okay, अब हम चलते हैं अपनी PPTs की तरफ, उनको खोल लेते हैं। हमारी PPTs ओपन हो जाएंगी तो उसके बाद हम उनको पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम अपनी पोस्ट असेसमेंट की तरफ आ जाएंगे, इस टॉपिक का लास्ट स्टेप। ठीक है। PPTs को खोल लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। ठीक है। क्योंकि ये मेरा अपना सब्जेक्ट है, मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ और वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैं सारा कुछ खुद पढ़ूँ, जो कुछ खुद पढ़ूँगी सारा कुछ ही पढ़ूँगी इंशाल्लाह। तो फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करते रहूँगी, तो आप लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग एक बार वीडियो को सुने, मैं खुद भी अपनी वीडियोज़ को सुनूँगी, क्योंकि जो हम सुनते हैं ना उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर हम किसी मटेरियल को सुनेंगे, याद करने के बाद, पढ़ने के बाद, तो फिर उससे भी काफ़ी बातें हमारे ज़हन में बैठ जाती हैं। ठीक है। चलो चलते हैं आगे। तो आगे चलते हैं। The ribosome is a ribozyme. Once the correctly charged tRNA has been placed in the
the A site and has rotated into the peptidyl transferase center. Peptide bond formation takes place. ठीक है, उसके बाद this reaction is catalyzed by RNA, specifically the 23 Sarchberg RNA component of the large subunit. ठीक है, उसके बाद में early evidence for this came from experiments in which it was shown that a large subunit that had been largely stripped of its proteins was still able to carry out peptide bond formation. सही, उसके बाद है proof that the peptidyl transferase is entirely composed of RNA. RNA has come from the high resolution 3-dimensional structure of the ribosome, which reveals that no amino acid is located closer than 18 angstrom from the active site. ठीक, उसके बाद है because catalysis requires distances in the 1 to 3 angstrom range, it is clear that the peptidyl transferase center is a ribosome that is an enzyme composed of RNA. How does the 23 Sarchberg RNA catalyze peptide bond formation? The exact mechanism remains to be determined, but some answers to this question are beginning to emerge. ठीक है, उसके बाद हमारे पास first base pairing between the 23 Sarchberg RNA and the CCA ends of the tRNA in the A and the P sites help to position the alpha amino group of the amino acyl tRNA to attack the carbonyl group of the growing polypeptide attached to the peptidyl tRNA. सही, इसके बाद में these interactions are also likely to stabilize the amino acyl tRNA after accommodation. ठीक है, because close proximity of substrates is rarely sufficient to generate high levels of catalysis, it is hypothesized that other elements of the ribosomal RNA synthesis change the chemical environment of the peptidyl transferase active site. For example, it has been proposed that nucleotides in the peptidyl transferase center accept a hydrogen from the alpha amino group of the amino acyl tRNA, making the associated nitrogen a stronger nucleophile. सही, उसके बाद this is a common mechanism used by many proteins to stimulate nucleophilic attack of carbonyl groups. ठीक है, so I hope आप लोगों को भी क्लियर हो गया, मुझे भी काफ़ी कुछ क्लियर हो गया. इसको कर देते हैं क्रॉस, हमारी पीपीटीज हो गई हैं. अब हम चलते हैं अपनी पोस्ट असेसमेंट की तरफ. ठीक है, हम आगे पोस्ट असेसमेंट पर और हम इसका क्विज ले लेंगे. क्विज को स्टार्ट कर लेते हैं. हाँ जी, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन proof that the peptidyl transferase is entirely composed of RNA has come from the high resolution 3-dimensional structure of the ribosome, which reveals that no amino acid is located closer than 18 angstrom from the active site. ये ट्रू है, तो चल लेंगे हम लोग आगे, इसको सेव कर लेते हैं. Once the correctly charged tRNA has been placed in the A site and has rotated into the peptidyl transferase center, dash formation takes place. तो क्या बन जाएगा? 23 SRNA. हाँ, मेरे ख्याल में तो ये बन जाएगा. इसको कर लेते हैं. तो फॉर्मेशन वाला गलत हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं है, हमने एक ही बार इस वीडियो में अटेम्प्ट करना है. सो कर लेते हैं क्रॉस. हमारी वो पोस्ट असेसमेंट होगी. ये हमारा टॉपिक हो गया कवर. ठीक है, ये मेरा टॉपिक कवर हो गया. और अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ. इस हफ्ते का जो लास्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं. हाँ जी, तो इसका नाम है ट्रांसलोकेशन इन लार्ज सबयूनिट. इसकी वीडियो सुन लेते हैं. Once the peptidyl transferase reaction has occurred, the tRNA in the P site. Once the peptidyl transferase reaction has occurred, the tRNA in the P site is deacetylated. That is, it is no longer attached to an amino acid, and the growing polypeptide chain is linked to tRNA in the A site. For a new round of peptide chain elongation to occur,
the P site tRNA must move to the E site and the A site tRNA must move to the P site. यानी कि जो P साइट पे है वो E साइट पे चला जाए और जो A साइट पे है वो P साइट पे आ जाए, और इस तरह से A साइट जो है वो फिर फ्री है. At the same time, the mRNA must move by 3 nucleotides to expose the new codon. जैसे ही ये जो है tRNAs मूव हो रहे हैं, mRNA का जो स्ट्रैंड है वो भी 3 न्यूक्लियोटाइड मूव होना चाहिए ताकि नया कोडॉन जो है वो एक्सपोज हो. These movements are coordinated within the ribosome and are collectively referred to as translocation. The initial steps of translocation are coupled to the peptidyl transferase reaction. Once the growing peptide chain has been transferred to the A site tRNA, the A site and P site tRNAs have a preference to occupy new positions in the large subunit. The 3' end of the A site tRNA is bound to the growing polypeptide chain and prefers to bind in the P site of the large subunit. The now deacetylated P site tRNA is no longer attached to the growing polypeptide chain and prefers to bind in the E site of the large subunit. In contrast, at this time, the anticodons of these tRNAs remain in their initial location in the small subunit bound to the mRNA. तो इनके जो एंटीकोडॉन्स हैं जो कि स्मॉल सब यूनिट में है वो उसी पोजीशन पे रहते हैं, हालांकि ये जो tRNAs जो हैं ये नई पोजीशन पे आ गए हैं. Thus translocation is initiated in the large subunit before the small subunit and the tRNA are said to be in hybrid state. तो अभी चूंकि ट्रांसलोकेशन जो है वो लार्ज सब यूनिट में हो गई है और स्मॉल सब यूनिट में नहीं हुई, इसलिए हम tRNAs को कहते हैं कि ये अभी हाइब्रिड स्टेट में है. Their 3' ends have shifted into a new location, but their anticodon ends are still in their pre-peptidal transferase position. वही यानी कि 3' end जो है वो शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन जो उनके एंटीकोडॉन एंड्स है वो उसी जगह पे है. Importantly, this change is associated with a counterclockwise rotation of the small subunit relative to the large subunit, facilitating interaction of tRNAs with distinct tRNA binding sites in the different subunits. तो ये जो small सबयूनिट है ये काउंटर क्लॉकवाइज जो है ये रोटेट होके इन की बाइंडिंग को tRNAs की बाइंडिंग को फैसिलिटेट करता है. द कंप्लीशन ऑफ ट्रांसलोकेशन रिक्वायर्स द एक्शन ऑफ अ सेकंड एलोंगेशन फैक्टर व्हिच इज कॉल्ड EFG. आपको याद होगा फर्स्ट एलोंगेशन फैक्टर EFTU है, तो ये जो सेकंड एलोंगेशन फैक्टर है ये EFG है. Initial binding of EFG to the ribosome occurs when associated with GTP. ये भी EFTU की तरह जब GTP के साथ एसोसिएट होगा तो इसकी बाइंडिंग होगी राइबोसोम के साथ. After the peptidyl transferase reaction, GTP binds to and stabilizes the ribosome in the rotated hybrid state. तो जब ये स्मॉल सब यूनिट जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ था और हाइब्रिड स्टेट में आ गया, इस वक्त ये
ये जो EFG GTP बाइंड करेगा और इसको इसी हाइब्रिड स्टेट में स्टेबलाइज करेगा. When EFG GTP binds, it contacts the factor binding center of the large subunit which stimulates GTP hydrolysis. अब जो है जब ये बाइंड हो जाएगा तो फिर GTP की हाइड्रोलिसिस होगी. GTP hydrolysis changes the conformation of EFG with two consequences. First, interaction between EFG GDP and the ribosome are thought to unlock the ribosome. ये समझा जाता है कि अब ये जो है ये राइबोसोम को अनलॉक करेगा. Structural studies reveal that there are gates that separate the A, P and E sites, and EFG GTP is said to unlock the ribosome by opening these gates. तो ये gates open करके actually ribosome को unlock करता है. जैसे ये gates open हो जाते हैं हम कहते हैं ribosome is unlocked. Second, the changed EFG GDP conformation binds to the A site of the decoding center. This interaction competes with the tRNA for binding to the A site of the decoding center. Because the ribosome is unlocked, the formerly A site tRNA can move into the P site, allowing EFG GDP to bind the A site. तो चूंकि ये राइबोसोम अनलॉक हो गया है, which means gates open है, gates between A and P site, P and E sites, इनके दरमियान जो ओपन है तो इसका मतलब है अब इजीली जो A साइट के साथ अमीनो साइट tRNA अटैच है वो इजीली मूव हो सकता है P साइट पे, और EFG GDP जो है वो आके अब A साइट में अटैच हो जाएगा. कंप्लीशन ऑफ ट्रांसलोकेशन is accompanied by a clockwise rotation of the small subunit back to its starting position. अब ये जो ट्रांसलोकेशन एक्चुअली हो चुकी है और ये ट्रांसलोकेशन कंप्लीट होगी जब ये स्मॉल सब यूनिट रिवर्स करेगा, यानी कि पहले ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट किया था और अब ये जो है क्लॉकवाइज रोटेट करके अपनी ओरिजिनल स्टेट पे, हाइब्रिड स्टेट से ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा. तो ट्रांसलोकेशन कंप्लीट हो गई है. द रिजल्टिंग राइबोसोम स्ट्रक्चर हैज ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड द एफिनिटी फॉर EFG GDP. अब जो रियल स्टेट में या स्टार्टिंग पोजीशन में जब राइबोसोम आएगा तो इसकी EFG GDP के लिए एफिनिटी जो है बहुत ही कम हो जाएगी, जिसका मतलब है EFG जो है वो इससे रिलीज हो जाएगा. एफिनिटी कम होगी तो इसका मतलब है वो रिलीज हो जाएगा. रिलीज ऑफ EFG results in the return of the ribosome to a locked state in which the tRNAs and mRNA are once again tightly associated with the small subunit decoding center and the gates between A, P and E sites are closed. तो वो गेट जो कि ओपन हुए थे और राइबोसोम अनलॉक हुआ था, अब स्मॉल सब यूनिट के वापस रोटेट करने की वजह से और EFG के
रिलीज होने की वजह से अब ये जो गेट्स हैं ये क्लोज हो गए हैं और हम कहते हैं कि राइबोसोम जो है वो दोबारा से लॉक हो गया। टुगेदर दीज इवेंट्स रिजल्ट इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ द A site tRNA into the P site, the P site tRNA into the E site, and the movement of mRNA by exactly 3 base pairs. ये सब कुछ जो है ये end of translocation है. The ribosome is now ready for a new cycle of amino acid addition to begin. सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। सो हम लोग अपनी रीडिंग कर लेते हैं और 50 को भी डाउनलोड करते हैं। Once the peptidal transferase reaction has occurred, the tRNA in the P site is deacetylated, no longer attached to an amino acid, and the growing polypeptide chain is linked to the tRNA in the A site. For a new round of peptide chain elongation to occur, the P site tRNA must move to the E site and the A site tRNA must move to the P site. At the same time, the mRNA must move by 3 nucleotides to expose the next codon. These movements are coordinated within the ribosome and are collectively referred to as translocation. The initial steps of translocation are coupled to the peptidal transferase reaction. Once the growing peptide chain has been transferred to the A site tRNA, the A and P site tRNAs have a preference to occupy new position in the large subunit. The 3' end of the A site tRNA is bound to the growing polypeptide chain and refers to bind in the P site of the large subunit. The deacetylated P site tRNA is no longer attached to the growing polypeptide chain and prefers to bind in the E site of the large subunit. In contrast, at this time, the anticodons of these tRNAs remain in their initial location in the small subunit bound to the mRNA. Okay. Translocation is initiated in the large subunit before the small subunit, and the tRNA are said to be in hybrid states. The completion of translocation requires the action of a second elongation factor called EFG. Initial binding of EFG to the ribosome occurs when associated with GTP. After the peptidal transferase reaction, EFG GTP binds to and stabilizes the ribosome in the rotated hybrid state. When EFG GTP binds, it contacts the factor binding center of the large subunit. Of the large subunit, which stimulates GTP hydrolysis. GTP hydrolysis changes the conformation of EFG with 2 consequences. First, interaction between EFG GTP and the ribosome are thought to unlock the ribosome. Second, the changed EFG GTP conformation binds to the A site of the decoding center. This interaction competes with the tRNA for binding to the A site of the decoding center. Release of EFG results in the return of the ribosomes to a locked state. In which the tRNAs and mRNA are once again tightly associated with the small subunit decoding center, and the gates between the A, P and E sites are closed together. These events result
P site. The P site tRNA into the E site and the movement of the mRNA by exactly 3 base pairs. The ribosome is now ready for a new cycle of amino acid addition to begin. ठीक है, और अब हमारा यहाँ पर 100 हो गया कंप्लीट. अब हम चलते हैं अपनी PPTs की तरफ. ओपन कर लेते PPTs को. Alright. So, Bismillahirrahmanirrahim. Translocation in the large subunit. Once the peptidyl transferase reaction has occurred, the tRNA in the P site is deacetylated, no longer attached to an amino acid, and the growing polypeptide chain is linked to the tRNA in the A site. इसके बाद, for a new round of peptide chain elongation to occur, the P site tRNA must move to the E site and the A site tRNA must move to the P site. At the same time, the mRNA must move by 3 nucleotides to expose the next codon. सही. इसके बाद these movements are coordinated within the ribosome and are collectively referred to as translocation. The initial steps of translocation are coupled to the peptidyl transferase reaction. ठीक है. इसके बाद है once the growing peptide chain has been transferred to the A site tRNA, the A and P site tRNAs have preference to occupy new positions in the large subunit. ठीक है. इसके बाद हमारे पास में 3' end of the A site tRNA is bound to the growing polypeptide chain and prefers to bind in the P site of the large subunit. The now deacetylated P site tRNA is no longer attached to the growing polypeptide chain and prefers to bind in the P site of the larger subunit. In contrast, at this time, the anticodons of these tRNAs remain in their initial location in the same subunit bound to the mRNA. Thus, translocation is initiated in the large subunit before the small subunit, and the tRNAs are said to be in hybrid states. ठीक है. Their 3' ends have shifted into a new location, but their anticodon ends are still in their pre-peptidyl transfer position. Okay. Importantly, this change is associated with the counterclockwise rotation of the small subunit relative to the large subunit, facilitating interaction of the tRNAs with distinct tRNA binding sites in the different subunits. ठीक है. The completion of translocation requires the action of a second elongation factor called EFG. ठीक है. Initial binding of EFG to the ribosome occurs when associated with GTP. सही. उसके बाद after the peptidyl transferase reaction, EFG GTP binds to and stabilizes the ribosome in the rotated hybrid state. Okay. So we have when EFG GTP binds, it contacts the factor binding center of the large subunit, which stimulates GTP hydrolysis. GTP hydrolysis changes the conformation of EFG with 2 consequences. First, interactions between EFG GTP and the ribosome are thought to unlock the ribosome. ठीक है. इसके बाद में structural studies reveal that there are gates that separate the A, P and E sites, and EFG GTP is said to unlock the ribosome by opening these gates. ठीक है. इसके बाद second, the changed EFG GTP conformation binds to the A site of the decoding center. This interaction competes with the tRNA for binding to the A site of the decoding center. ठीक है. Because the ribosome is unlocked, the formerly A site tRNA can move into the P site, allowing EFG GTP to bind the A site. Completion of translocation is accompanied by a clockwise rotation of the small subunit back to its starting position. The resulting ribosome structure has dramatically reduced affinity for EFG GTP. Release of EFG results in the
return of the ribosome to a locked state in which the tRNAs and mRNA are once again tightly associated with the small subunit decoding center, and the gates between the A, P and E sites are closed. Together, these events result in the translocation of the A site tRNA into the P site tRNA into the E site, and the movement of mRNA by exactly 3 base pairs. The ribosome is now ready for a new cycle of amino acid addition to begin. Okay, so यहाँ पर हमारी PPTs हो गई है complete. काफ़ी प्रोसेस समझ में आ गया. आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा. चलते हैं अपने पोस्ट असेसमेंट की तरफ. यहाँ पर क्विज है हमारा, क्विज ले लेते हैं. और so during the translation in the larger subunits, release of EFG results in the return of the ribosome to a locked state in which the tRNAs and mRNAs are once again tightly associated with the small subunit decoding center, and the gates between the A, P and E sites are closed. I think this is true. देखते हैं, आप पता नहीं सही होती थोड़ी. During the translation in the larger subunit for a new round of peptide chain elongation to occur, the P site tRNA must move to the E site and A site tRNA must move to the P site. At the same time, the mRNA must move by 3 nucleotides to expose the next codon. और ये true है. चलें जी, कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक. चलते हैं आगे. दोनों हो गए करेक्ट. थैंक्स लॉर्ड. अब इसको कर लेते हैं क्रॉस. चलें जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा इस हफ्ते का इसका PIF 101 इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स का हमारा इस हफ्ते का सारे टॉपिक सबसे कंप्लीट हो गए हैं. तो लास्ट टॉपिक है ट्रांसलोकेशन इन लार्जर सबयूनिट, और यहाँ तक टॉपिक नंबर 55 लेसन नंबर 55 तक हमारे हो गए हैं. पोस्ट असेसमेंट प्री असेसमेंट इसकी रही थी, पोस्ट असेसमेंट थी वो भी हमने कर लिया. तो मतलब इतने जो है ना हमने पढ़ लिए हैं, एक बार पूरा का पूरा रिवाइज़ कर लिया मेरा मतलब फेमिलियर हो गया, क्लियर हो गया. ठीक है. उसके बाद आप लोगों ने मेरा जो लाइव सेशन वो मैं करूँगी बाद में, उसमें मैं सिर्फ MCQs करूँगी. ठीक है. और आप लोगों के कोई सवाल जवाब होंगे उसके आंसर दूँगी. ठीक है. आप लोगों ने उसे ज़रूर ज्वाइन करना है. ठीक है. और मेरी बाकी की वीडियोस भी आप लोग देख लिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. ठीक है. तो मुझे तो काफ़ी फ़ायदा होता है सारा का सारा टॉपिक पढ़ने से. ये सारा जो लिखा हुआ है ना टॉपिक ही आप ये सब करने के बाद, पढ़ने के बाद, वीडियो सुनने के बाद, रीडिंग करने के बाद, पोस्ट असेसमेंट के बाद हमें जो है ना ये पूरा क्लियर हो जाता है. ये वाला ट्रांसलोकेशन लार्जर सबयूनिट अब मुझे पता है कि ये क्या चीज़ है, इसे कहाँ पे हो रहा है, क्या है इसका मतलब. ठीक है. तो इस तरह से हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं. तो आई होप इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें कामयाब करेगा. मेरे लिए भी दुआ करिएगा आप लोग. और